सब लोग आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। बट आज हम लोग माइनक्राफ्ट पे खेलने जा रहे हैं एक डीएलसी जिसका नाम है आर्टमिस रॉकेट बिल्ड। और ये वाली जो डीएलसी है ये बहुत मज़ेदार डीएलसी है। इसको मैंने माइनक्राफ्ट के मार्केट प्लेस से इंस्टॉल किया है। आप लोग भी जाके कर सकते हो मार्केट प्लेस से माइनक्राफ्ट के। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। बहुत मज़ेदार डीएलसी होने वाली है। इसके बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं फ्यूचर पे। लेट्स को शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा गेम भी स्टार्ट हो चुका है। भाई साहब, क्या लेबोरेटरी है ये? लेबोरेटरी है ना ये? कोई एक हमारे से बात करते हैं। इंस्ट्रक्टर, ओके टॉप। ओके, साउंड थोड़ा कम कर लेते हैं। वेलकम टू लॉन्च कंट्रोल। ओके, लॉन्च कंट्रोल है। This is where we make sure our rocket take off safely. We were working on a really exciting project called the artmis program and we want to be a part of it. Okay, so ये लोग जो है ये एक लॉन्च सेंटर है नासा का। और ये लोग मेक श्योर करेंगे कि जो हमारा रॉकेट है वो सेफली टेक ऑफ हो जाए। और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम है आर्टमिस प्रोग्राम और हम लोग भी इसका पार्ट है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसका पार्ट बने। चलो नेक्स्ट। we made some special classes just for you that will teach you everything you need to know about building rockets and the artmis program. And we have a special mission for you to practice your skill. Okay, so इन्होंने हमारे लिए कुछ स्पेशल क्लासेस बनाई है और जो हमें टीच करेंगे कि एक रॉकेट कैसे काम करता है, रॉकेट कैसे बनाते हैं। और ये बहुत मज़ेदार क्लासेस है। सो चलिए देखते हैं और आगे क्या है। This will get you ready for when we start sending cargo and even people to the moon. और ये भी हम लोगों को रेडी करेगा कि हम लोग मून पे कार्गो या फिर इंसान कैसे भेजेंगे। The first mission you will be working on is launching a satellite into space. This satellite will help us communicate with our spacecraft when we fly to the moon. Okay, so हमारा जो फर्स्ट मिशन होने वाला है इन क्लासेस के बाद वो होने वाला है एक सैटेलाइट बनाना जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे स्पेसक्राफ्ट से। ओके, अब आगे। It's an important step. It is our mission and you will be playing a big role in making it happen. ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है और हम लोग भी उसे एक बहुत बिग रोल प्ले करेंगे। चलो नेक्स्ट। ऑल राइट, इफ यू आर रेडी टू गेट स्टार्टेड विद द लेसन्स, हेल्ड डाउन द हॉलवे एंड थ्रू द फर्स्ट डोर that's where the classroom is. ओके, तो ये बोल रहा है कि ठीक है रेडी हो जाओ और लेसन्स के लिए हमें हॉलवे पे जाना है। हॉलवे से जो फर्स्ट डोर है वो हमारा सबसे पहला क्लास होने वाला है। वंस यू आर देयर, just talk to the teacher and they will get you started on learning all about why we are going to the moon. ओके, तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो हमें टीचर से बात करना है और ये सीखना है कि हम लोग मून में क्यों जा रहे हैं। गॉट इट? थैंक यू इंस्ट्रक्टर। और भाई कितनी बड़ी स्क्रीन है। सही है, चलो अब चलते हैं हमारी क्लासेस के लिए। ओके, हो रहा, डोर खुल गया। क्या ऑटोमेटिक डोर है? मैं 2 किलोमीटर दूर हूँ तब भी खुल रहे हैं भाई साहब। सही है। ओके, सो ये रहे हमारे सबसे पहले टीचर। लेसन 1, इंट्रोडक्शन टू आर्टमिस। ओके,
बात करते हैं हमारे टीचर से। टीचर सुनो, वेलकम टू द artmis rocket build world. I am here to tell you about the artmis mission. मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ artmis वर्ल्ड में। मैं यहाँ में हूँ तुम्हें बताने के लिए कि artmis मिशन क्या है। ओके, NASA is going to land first woman and person of color on the moon. As part of this mission, they will use new technologies to explore more of the moon than ever before. नासा जा रही है फर्स्ट वुमेन और पर्सन को लेके मून पे, और एज पार्ट दिस मिशन ये लोग नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और मून पे जाने वाले हैं। NASA will also work with other companion and countries to set up a permanent base on the moon. What we learn from our time on the moon will help us send astronauts to Mars for the first time. ये और भी कंपेनियंस के साथ वर्क करेंगे और कंट्रीज़ के साथ एक मून में परमानेंट बेस बनाने के लिए, और वो लोग मून पे लाइक टाइम बिताना सीखेंगे और फिर मार्स को उसी टाइम में एस्ट्रोनॉट मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मार्स में भेजेंगे। ऐसा Why are we going back to the moon? Why is NASA sending people there again? ये लोग वापस मून में क्यों जा रहे हैं और नासा पीपल मतलब आदमियों को क्यों भेज रहे हैं मून पे? और हम यहाँ पे क्लिक करके दे रहे हैं। जानना है कि क्यों भेज रहा है, ये तीन हमें बताएगा ये सब के बारे में। सबसे पहले डिस्कवरी, नासा इज यूजिंग व्हाट इट has learned from exploring space for more than 50 years to explore the moon with artmis. NASA will build a long-term presence at the moon and an outpost in orbit around the moon called gateway. Okay, economy देखते हैं। The artmis mission will help create new jobs and industries on the moon and help people learn new skills. Okay, inspiration भी देख लेते हैं। We will explore more of the moon than ever before with the help of other companion and countries. We will also inspire people to learn more about space. We are the artmis generation. Okay, done. You have completed my lesson. Go through the gate. Go through the door and to learn about how a rocket works. Thank you sir. Thank you sir हमें सिखाने के लिए। Second lesson, let's go. Okay sir, hello sir. Second lesson, how does a rocket works? ठीक है, चलिए बताइए सर क्या करना है हमें। Before we start building our own rocket, let's talk about the basics. ठीक है, engineers use special laws called Newton's law to understand how forces work and make sure rockets fly properly. These laws were first written down by a scientist named Sir Isaac Newton a long time ago, but they are still very important for rocket engineers today. Okay, so हम लोग न्यूटन के लॉ सीखने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है सीख लो। Okay, do you want to know more about Newton's laws and how they help us build rockets? Let's find out. चलो,
First law. First law. Objects like to stay still or keep moving unless something else makes them change. For example, if a rocket is standing still and if we do not push it, it will stay still, but if we give it a push, it will keep moving until something else makes it stop. This is called Newton's first law of motion. It's important for us to understand this when we are building and flying rockets. Okay. Second law. Did you know that how quickly an object speeds up or slow down or changes direction depend on how much mass it has and how hard it is pushed? This is called Newton's second law of motion. If we want to make a rocket go faster, we can either make it lighter or push it harder. Okay. Third law. How you ever heard the saying every action has an equal and opposite reaction? Well, this is a scientific idea called Newton's third law of motion. It's mean that when something pushes or pulls on something else, the second thing pushes or pulls back just as hard. This is how we can make things move like rockets. A rocket engine produces thrust through action and reaction. The engine produces hot exhaust gases which flow out of the back of the engine. Reaction, a force is produced in the opposite direction from the fuel, pushing back on the rocket. Okay, आई आप लोग समझ गए होंगे. नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता सकता हूँ. सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई चीज़ अगर एक जगह ऐसी मतलब लाइक एक बॉल है, उसको आप लोग एक जगह रख दो, एक जगह ही रहेगी, वो वहाँ से नहीं हिलेगी. अगर आप उसको हिला दो, जाते रहेगी जब तक उसको कोई रोके ना, वो जाते रहेगी जब तक वो उसके बीच में कोई आ नहीं जाता रोकने के लिए. और ऐसी स्पेस पे भी होता है, लेकिन स्पेस पे ग्रेविटी नहीं होती है. अब वो बॉल क्यों रुकती है? अगर हम लोग उसको स्लो धक्का देते हैं तो वो जो है और भी स्लो होता है तो रुक जाती है, क्योंकि जो हम लोग धक्का देते हैं उसको स्लो से, वो जो है ग्रेविटी का जो फोर्स है उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते. मतलब ग्रेविटी के ऊपर वो हावी नहीं हो पाते और ग्रेविटी उसको रोक देती है. अगर हम उसी बॉल को बहुत फास्ट धक्का देते हैं, सो ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई काम नहीं आता. सो बॉल जाते रहती जब तक उसको रोके ना, और जब तक वो स्लो नहीं होती वो ग्रेविटी की वजह से नहीं रोक सकती. और ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ ये है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो स्पीड है, ठीक है. तब देखो एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको फास्ट करेंगे कभी ना कभी वो स्लो हो ही जाएगा और रुक जाएगा. और अगर समझ लो एक एग्जांपल है, अगर एक बहुत बड़ा पत्थर है और एक बहुत छोटा पत्थर है, ठीक है, और अगर हम उस छोटे पत्थर को फेंकेंगे वो बहुत दूर जाएगा, बहुत स्पीड से जाएगा. वही अगर हम लोग बड़े वाले पत्थर को फेंकेंगे वो बहुत दूर तो नहीं जाएगा, बहुत पास में गिरेगा और बहुत स्लो भी रहेगा. बिकॉज न्यूटन का जो सेकेंड लॉ कहता है वो ये कहता है कि मास जितना होगा और वेट जितना होगा, ग्रेविटी उतना
मतलब ग्रेविटी का प्रेशर उतना रहेगा उसके ऊपर, वेट बहुत रहेगा और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर उसका मास कम रहेगा और लाइट रहेगा बहुत, सो जो है उसको बहुत दूर तक हम लोग ले जा सकते हैं, बट हर चीज़ को नहीं ले जा सकते। ये कहते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लाइक मैं एग्जांपल दे आपको, समुंदर के जो वेव्स आते हैं उसके बता देता हूँ। तो समुंदर के जो वेव्स आते हैं, आपने बीचेस में देखा होगा कि बीचेस में जो समुंदर का पानी है वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। ऐसे ही जैसे वो आता है वो सेम मतलब सेम स्पीड में वापस चला जाता है, सेम स्पीड में आता है जाता है, आता है जाता है। इसको बोलते हैं एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। When we are building and flying rockets, it's important to think about the different forces that will be acting on it. These forces can push or pull the rocket in different directions, and some forces are stronger than others. Okay? For example, the force of gravity is always pulling the rocket down towards the ground, and the rocket's engine create a force called thrust that can push the rocket up into the sky to make sure our rocket flies the way we want it to. We need to think about how all these forces will affect it. Weight. Weight is the force that the Earth's gravity create on an object. Gravity caused a mass to have weight and is what makes things fall into the ground. And Earth is big and heavy, so it has a lot of gravity. That's why everything weighs something here on Earth. But did you know that weight can be different on different planets? That's because each planet has a different amount of mass, which is how heavy it is. Thrust. हम लोग सोच रहे हैं कि थ्रस्ट क्या है। सो थ्रस्ट वो होता है जो कि लाइक आप लोग देखे होंगे रॉकेट के, जब रॉकेट उड़ता है उसके नीचे से ऐसा धुआं धुआं आता है ना, ऐसा आग सा निकलता है, उसको बोलते हैं थ्रस्ट, जो कि रॉकेट को ऊपर की तरफ पुल करता है। और जितना ज़्यादा पावरफुल होगा रॉकेट उतना ही तेज़ी से और दूर जाएगा। आई थिंक हम लोग समझ गए होंगे। अब थ्रस्ट के बारे में ये सर बता रहे हैं हमारे। Thrust is the force that makes a rocket move. It's created by the rocket's engine and pushes the rocket in a certain direction. Have you ever blow up a balloon and let it go? The air rushing out of the balloon creates a force that pulls the balloon in the opposite direction. It's kind of like that with a rocket. When the rocket's engine burns fuel, it creates a force that pushes the rocket forward. This force is called thrust. Next पे जाते हैं. We want to build a rocket that can fly all the way to the moon. The moon is really far away, so we need to make sure our rocket goes fast enough to get there. We also need to make sure we have enough fuel to burn to power the rocket. Okay, next. That's because the rocket needs to go fast enough to escape the Earth's gravity. Gravity is the force that makes everything fall to the ground. To break free of the
Earth's gravity. We need to go fast. Can you guess how fast we need to go? Okay. After we learn more about how fast we need to go and how much fuel we need, we can start building a rocket to fly to the moon. Okay, velocity and delta 5. Velocity. This means the speed of something in a certain direction. Delta 5. This is a short way to refer to a change in velocity. We will be starting from 0 and accelerate to 6 miles second. Going that fast, you could go from New York to San Francisco. In just 8 minutes, we will be burning our rocket fuel to achieve our Delta 5 goal. Okay, next. You have completed my lesson. Go through the gate, go through the door and to learn rocket procession methods and fuel. थैंक यू सर, हम लोग को इतना बड़ा लेसन सिखाने के लिए थैंक यू। अब चलते हैं लेसन 3 पर। गाइस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये वीडियो 30 मिनट या 40 मिनट की होने वाली है, सो बने रहिएगा लास्ट तक। लेसन 3 प्रोसिलेशन एंड फ्यूल्स। ओके सर, बताइए हम लोगों को क्या है। We now know about forces on our rocket, velocity and delta 5. We have a lot of stuff to being with us, so our rocket is going to be pretty heavy. Remember, not only do we need to bring our spaceship, astronauts can enough fuel to launch our rocket, we also have to bring enough fuel to get back. A rocket with more mass will speed up more slowly. So we are going to need a lot of fuel. Okay. Humans have been experimenting with rockets for thousands of years. Early propulsion engines were developed in Greece around 400 BCE. The first true rockets were created in China about 800 years ago. Over the years, rockets have taken on only shapes. The fuels first burned in thus rockets can be liquid or solid. On Earth, many cars on the road are powered by engines that convert liquid fuels into energy to produce motion. You may be familiar with some forms of liquid fuel such as gasoline, kerosene, diesel, alcohol. Over rockets will be partly powered by liquid hydrogen. Okay, soiled. With soiled fuel, you do not have to fill up the tank right before launch. A soiled rocket can sit for years before firing. The soiled rocket fuel used in the artmis rocket is called P-bun. Is P-bun का full form -- don't worry, we want to make you say that 3 times fast. बोलना भी नहीं हम लोगों को क्या लिखा है। ओके आगे नेक्स्ट। लेट्स टेक ए क्लोजर
look at the parts of the artmis space launch system SLS rocket. Next, starting with the sides, we have the soiled rocket boosters. The SLS has two soiled rocket boosters that burn approximately 6 tons of soiled fuel each second to help lift the enormous rocket off the launch pad and send it soaring to space. Their job is finished in just 2 minutes. Okay. Inside the large central section called the core stage are two liquid propellant tanks holding liquid hydrogen fuel and liquid oxygen. At the base are four large RS-25 rocket engines. These engines, together with the boosters, accurate the rocket to more than 17,000 mph during the first 8 minutes of flight. Next, the top of the rocket is where the Orion spacecraft is located. The long nose of the rocket contains the launch abroad system that can active on a moment's notice to pull and Orion crew to safety in an emergency during launch. Okay. The rocket is huge. You will see for yourself in a few minutes, but not all of it will make it to moon. Once the core stage propellant is spent, the empty tanks are just unnecessary weight, so they drop off to make the rocket lighter. Is this called staging? Once launched, the soiled booster do their job in about 2 minutes, then fall away, spanning into the Antarctic Ocean. The core stage of the rocket, using liquid hydrogen and liquid oxygen fuel, separates about 6 minutes later, spanning into the Pacific Ocean. At this point, all that's left in the upper stage of the rocket, called interim cryogenic pursuit stage ICPS, and the Orion spacecraft. About 50 minutes into the flight, the ICPS fires briefly to rise Orion's orbit. It fires again about 30 minutes later to push Orion's out of Earth orbit on a trajectory towards the moon, and separates from Orion. At about 2 hours into the flight, the Orion spacecraft separates the countries its journey to the moon. Okay. You have completed my lesson. Go through the door and the next artmis mission. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू सर. चलो अब यहाँ से जाना है. हमारे लास्ट लेसन है. आई थिंक ये लास्ट लेसन होना चाहिए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. लेसन 4, artmis व्हाट नेक्स्ट. ओके सर, बताइए क्या है. artmis is planned to
include several missions. Artemis I was successfully completed in December 2022 with the return of the uncrewed Orion spacecraft. This launch provided the technology and paves the way for the crewed missions. Learn more about Artemis 2 and 3 below. Artemis 2. Currently scheduled for 2024. Okay. Artemis 2 will carry a 4-member of crew of astronauts further than any humans have been into space. 4,600 miles belong the far sides of the moon. The 8-10 days mission will include testing Orion's systems that enabled the crew to live in space, demonstrating options needed for future missions orbiting the moon and collecting data before returning to Earth. Okay. Artemis 3 currently scheduled for 2025. Okay. Artemis 3 will be the first crewed moon landing since Apollo 17 in 1940. In 1972, astronauts aboard Orion's will dock with the transfers to the human landing system to visit the moon's south pole region. The crew will remain in space for about a month before returning to Earth. Okay. Let's review some terms before you head into the vehicle assembly building. Okay. Orion spacecraft. The NASA spacecraft that will carry astronauts from Earth to lunar orbit and back. Okay. Next, Space Launch System rocket. The only rocket that can send Orion's astronauts and cargo to the moon on a single mission. The SLS is the most powerful rocket that's ever flown to space. Okay. Gateway. The space station orbiting the moon where astronauts will live, conclude science and prepare for lunar surface missions. On regular Artemis missions, Gateway will orbit the moon for at least 15 years, supporting long-term science investigations and human discovery on and around the moon in deep space. Why? Okay. Human landing system. Star-shaped human landing system provided by SpaceX, and the human landing system are the final mode of transportation that will take astronauts from lunar orbit to the surface and back to orbit. Okay. Artemis Base Camp. Artemis Base Camp is a concept that includes all the elements astronauts will need to explore the conclude science on the moon. The base camp may be in one fixed location or disturbed across a area border area on the lunar surface. It may include a modern surface habitat, a rover, a mobile home and laboratory, power generation and storage, and all the tools
and equipments astronauts will need to live and work on the moon. Okay. You have completed my lesson. Go through the door and head to the elevator to get started with building a rocket. थैंक यू सर सिखाने के लिए। हमारे लेसन्स पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं एलिवेटर से ऊपर। ओके, कहाँ है ये रहा। बजट यूज्ड सैटेलाइट। सो गाइस, इसके आगे की स्टोरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड के लिए इतना ही। एपिसोड बहुत बड़ा हो चुका है, 30 मिनट से ऊपर गए। सो बाय बाय, सी या गुड बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और इस प्रीमियर को पूरा देखना। प्रीमियर करूँगा कि सीधा वीडियो डाल दूँगा, वो इस वाली वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। सो बाय बाय, सी यू, गुड बाय एंड पीस। और सुनिए, मैं माइनक्राफ्ट में मेरी एक प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। एक काम करता हूँ, अभी बता देता हूँ। सम प्रॉब्लम्स मुझे माइनक्राफ्ट डिलीट करना पड़ा और दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा, तो जो हमारी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़ है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। बट एक नई सीरीज़ आने वाली है जल्द ही, जिसका नाम होने वाला है फिर से न्यू सर्वाइवल। सो ये वाली जो सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो बाय बाय, सो गुड बाय एंड